Hello students, welcome to Edviz Learning. Today we are going to start with a topic from geometry, that is your Maths-2 textbook. Chapter number 5, Coordinate Geometry. This is a chapter which you had even last year. Last year we only did some basic parts of this chapter. This year we are going to expand a little bit on the same thing. So last year जो हम लोगों ने किया पहले वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Last year we studied कि कैसे every 2D object, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो हम लोग पेपर पे बना सकते हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, 10th तक जो है हम लोग सिर्फ टू डायमेंशनल चीजों की बातें करेंगे, दो ही एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इन दोनों को यूज करके कैसे हम लोग किसी भी 2D शेप को या किसी भी 2D डायग्राम को कैसे हम लोग पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम लोग बता सकते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स हम लोग बता सकते हैं. ठीक है, दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर. This year we are going to talk about certain more things about two different points, जैसे कि distance formula, section formula and slope of a line. Okay, distance formula as the name suggests is going to be a formula to represent the distance between any two given points. Now as you can see on screen there are two axes, x axis और y axis. अगर मुझे यहाँ पे कोई भी point plot करना है, suppose I plot the point here, तो इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट्स. ओके, नाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? तो हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस कहां पे है और अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस कहां पे है. सो मुझे यहां पे दो वैल्यूज लिखना है, एक एक्स के अकॉर्डिंग एक वाई के अकॉर्डिंग. जो एक्स वाला वैल्यू है 3, इट इज कॉल्ड एज एब्सिसा which we have studied last year, और y वाला जो वैल्यू है 2, that is called as ordinate. Okay, so we can plot any point we want on this axis. Suppose किसी ने बोला plot 4,2, तो 4,2 कहां पे आएगा? पहले x देखेंगे हम लोग, फिर y देखेंगे. 4,2 exactly यहां पे आएगा बीच में. Okay, where will be -4,2. तो x का कोऑर्डिनेट -4 यहां पे है, y का कोऑर्डिनेट +2, here it is. So here is your point -4,2. तो पहले हमेशा x का देखेंगे वैल्यू, देन y का देखेंगे. इट्स जस्ट लाइक फाइंडिंग योर सीट इन अ मूवी थिएटर. हम लोग मूवीज में जाते वक्त सीट्स कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट वी लुक एट द रो, अल्फाबेट जो भी रहेगा A B C D, उसके बाद नंबर पे ध्यान देते हैं. सेम वे यहाँ पे पहले x का वैल्यू देखना है और फिर y का वैल्यू देखना. ठीक है, सो ये हम लोगों ने लास्ट ईयर ऑलरेडी स्टडी किया था. दिस ईयर वी हैव द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. Let us see how to derive the distance formula. I'm going to the next page. So once again I have the two coordinate axes here. ठीक है, यहाँ पे center में this point is our origin. Okay, this is the origin point. Now अगर मुझे यहाँ पर कोई भी दो points plot करके उनके बीच में का distance find करना है तो कैसे find करूंगा? That's what distance formula is all about. But अगर कोई easy point है, suppose y axis पे ही दो points है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, इसीलिए सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 0,y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 0,y2. एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही है दोनों जगह पे, बिकॉज एज यू ऑल नो इफ द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस द एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0. अभी अगर मुझे किसी ने पूछा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मेरे लिए बहुत सिंपल है बताना. यहाँ पे क्या आता था? y2, यहाँ पे क्या आएगा? y1. तो डिस्टेंस कितना हुआ? y2 माइनस y1. Okay, very simple. Similarly, if the point is on x axis completely, suppose एक point यहाँ पे है, इसका coordinates है x1, 0. This time y coordinate will be 0 because the point lies on x axis. ठीक है, एक और point यहाँ पे है suppose x2, 0. और किसी ने पूछा कि इन दोनों के बीच में distance कितना है, तो y तो वैसे भी 0 है, उससे कुछ लेना देना नहीं है. ये वाला जो distance है वो कितना होगा? x2 माइनस x1. बिकॉज यहां पे x1 है, यहां पे x2 है. ओके, डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1. सिंपल, यहां पे कोई फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं हमारे पास. नेक्स्ट एक और सिनेरियो लेते हैं हम लोग. सपोज द पॉइंट लाइज समवेयर हियर. ओके, एंड एक और पॉइंट मैंने दे दिया इसी लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, हियर. ओके, now what are the coordinates of these points? First of all, suppose यहाँ पे है x पे x1, okay, यहाँ पे है y पे y1, यहाँ पे है y2.
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x देखेंगे x1, y1, फिर y देखेंगे x1, दिस टाइम इट इज y2. ओके, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगर किसी ने पूछा, वंस अगेन x की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे सेम है, हम लोगों को पता नहीं चलेगा. ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस था उतना ही होगा, करेक्ट. और ये कितना था, हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इट इज नथिंग बट सेम y2 माइनस y1. ठीक है, y2 माइनस y1. सिमिलरली इफ द पॉइंट लाइज हियर समवेयर ऑन द x एक्सिस, लेट अस से हियर, ओके, और दूसरा पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर, समवेयर हियर इट इज लाइन. सो दिस टाइम x का कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है. ओके, सपोज दिस इज x1, दिस इज x2. ओके, ये मैं इरेज कर देता हूं ऊपर वाला पार्ट, सो दैट टू अवॉइड कंफ्यूजन. सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, और y पे हियर इट इज y1. ओके, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? लुक एट द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट, x1, y1. Okay, what are the coordinates of this point? This is x2 this time, but the y coordinate is still the same, y1. Once again किसी ने अगर पूछा डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच, तो जितना डिस्टेंस यहां पे है उतना यहीं पे होगा. सो इट इज नथिंग बट x2 माइनस x1 वंस अगेन. ठीक है, ये सब एग्जांपल्स में क्यों दे रहा हूं, बिकॉज फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोगों को समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लेट अस डिराइव द डिस्टेंस फॉर्मूला. Once again, I have the coordinate axis with me, x-axis and y-axis, but this time the points are like this. Suppose एक point मैंने लिया यहाँ पे, okay, और दूसरा point मैंने यहाँ पे लिया. Now this time they are not in straight line, कुछ लेना देना नहीं है. इस point का coordinate, suppose x वाला coordinate है इसका x1, y वाला coordinate है इसका y1, okay, and for the second point इसका x वाला कोऑर्डिनेट है x2 एंड y वाला कोऑर्डिनेट है y2. सो टोटली डिफरेंट. दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2. ओके, अभी अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में का एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? दैट इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला इज ऑल अबाउट. ठीक है, ये लाइन का लेंथ कितना होगा. सो हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? वेरी सिंपल, देयर इज अ सिंपल प्रोसीजर दैट विल फॉलो. हम लोग क्या करेंगे, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करेंगे. कैसे? इस पॉइंट की लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं यहां पे. ओके, तो अभी ये जो एंगल है इट इज 90 डिग्री. ऑब्वियसली एक्स और वाई के बीच का एंगल है, दैट इज 90 डिग्री, करेक्ट, विच मेक्स दिस अ राइट एंगल ट्रायंगल. पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी सपोज, तो इसको मैं सी अज्यूम कर लेता हूं. दिस इज द ओरिजिन. नाउ अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा? वी हैव पाइथागोरस थ्योरम फॉर दैट. ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो वही हम लोग यूज करेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, बट बिफोर दैट पहले साइड 1 और साइड 2 तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, करेक्ट. तो पहले मुझे ये पॉइंट पता लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या होगा. ओके, जस्ट लुक एट द कोऑर्डिनेट्स. इसका x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? x2, करेक्ट. सो दिस पॉइंट इज x2, y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट y1, so y1, x2, y1. Now what is the distance between b and c? Why I am finding out the distance between b and c? Because this is one of the sides, correct. एक साइड का लेंथ मुझे मिल गया, तो दूसरे साइड का लेंथ भी मैं फाइंड आउट करूंगा, एंड देन आई विल फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज. तो BC का लेंथ कितना होगा? सी हियर, यहां पे जो x का कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, x2 दोनों जगह पे है. तो ये डिस्टेंस कितना है B से C तक? इट इज सिमिलर टू दिस ओनली, इक्वल है दोनों, करेक्ट. तो B to C इट इज y2 माइनस y1 ओनली. ओके, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट y2 माइनस y1. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C? ओके, तो A और C के बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वंस अगेन जस्ट लुक एट द कोऑर्डिनेट्स. y कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, y1 y1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऑल वी नीड इज द डिस्टेंस बिटवीन these 2 points which is the same as these 2 points.
दैट इज x2 माइनस x1. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? x2 माइनस x1. ओके, सो डिस्टेंस BC is y2 minus y1, distance AC is x2 minus x1. So hypotenuse कैसे find out करेंगे? Therefore in triangle ABC, okay, in this triangle, by Pythagoras theorem we can say, by Pythagoras theorem we can say that AB square, which is the hypotenuse, will be equal to AC square plus BC square. Correct? Hypotenuse का formula यही होगा by Pythagoras theorem. Though now we'll just substitute the values. What is AC square? So AC square मतलब x2 minus x1 का whole square. This is the length of AC, right? x2 minus x1 whole square. Plus what is BC square? y2 minus y1 the whole square. ओके, ये हो गया लेंथ ऑफ AB स्क्वायर. सो देयरफॉर व्हाट इज द डिस्टेंस AB? AB का स्क्वायर ये है, तो AB क्या होगा? जस्ट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो द डिस्टेंस ऑफ AB इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. सो ये किसी भी दो पॉइंट्स के लिए ट्रू है. कोई भी दो पॉइंट्स अगर दिया है तुम लोगों को, एक का कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1, दूसरे का होगा x2 y2, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में का अगर डिस्टेंस फाइंड कर रहा है तो सिंपली यूज दिस फॉर्मूला. स्क्वायर रूट ऑफ, पहले x का लिया तो भी चलेगा, y का लिया तो भी चलेगा. ओके, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. नाउ द ऑर्डर डज नॉट मैटर. अगर तुम लोगों ने x2 माइनस x1 की जगह पे x1 माइनस x2 किया, स्टिल इट इज करेक्ट, बट मेक श्योर यू डू द सेम थिंग फॉर द y कोऑर्डिनेट ऑल्सो. अगर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर किया यहां पे, तो y के लिए क्या करेंगे? y1 माइनस y2. ओके, यू हैव टू डू द सेम थिंग फॉर y बेसिकली. सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी हैव आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, that is 5.1. Let us go to solving exercise 5.1. Okay, I'll change the page. So practice set 5.1. Okay, let's one by one go through the questions. The first question is, find the distance between each of the following pairs of points. There are 2 points given in each and every question. We just have to find out the distance between them. Okay, first question. Question number 1. First one. We have to find the distance between point A, that is 2,3, and point B, that is 4,1. Okay, we just have to find the distance. Simply use the distance formula. This is x1, y1. This is x2, y2. ओके, एक पॉइंट को हम लोग ले लेंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट को ले लेंगे x2 y2. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट, फॉर्मूला पहले लिख लिया अगर मैंने. व्हाट इज द फॉर्मूला? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ओके, नाउ जैसा कि मैंने बोला, इट इज नॉट कंपल्सरी कि तुम लोग इसी को x1 y1 लो या फिर इसी को x2 y2 लो. उल्टा लिया तो भी चलेगा, डज नॉट मैटर. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2. सपोज मैंने इसको x2 लिया है, b को, तो 4 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट इज 2, 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस फॉर y इट इज 1 माइनस 3. सो 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर. ठीक है, सीक्वेंस याद रखो. यहां पे अगर मैंने पहले लिया है 4 माइनस 2, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 3 ही लेना पड़ेगा. 3 माइनस 1 लिया तो इट विल बी रॉन्ग. सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज 2, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, वंस अगेन इट इज माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस, इवन इफ इट इज अ नेगेटिव नंबर द स्क्वायर विल बी पॉजिटिव. Minus 2 का square will also be equal to 4. So finally we are getting square root of
8. This much is the distance between the 2 points. This can be further simplified. 8 मतलब क्या हो गया? 2 into 2 into 2. So one pair of 2s we can bring outside. तो एक 2 बाहर आ जाएगा सिर्फ, और ब्रैकेट में क्या बचेगा लास्ट में? 2 root 2 units. Okay. This much is the distance between point A and B. 2 root 2 units. So ये हो गया मेरा first question. Simply we use the distance formula. Please make a note of this. What we did here is these are the given points. एक को हम लोगों ने ले लिया x1 y1, दूसरे को ले लिया x2 y2. Okay. Use the distance formula, that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This formula is very important. Make sure you fit it inside your minds. ठीक है. So 4 minus 2 the whole square मतलब 4 is x2, 2 is x1 plus 1 minus 3 the whole square. Okay, y2 and y1. When you solve this, you are finally getting square root of 8, which can be further simplified as 2 into 2 into 2. So 1, 2 we can take outside. We know the rules of square root. So 2 root 2 units is the answer for the first question. Similarly, we can solve the next question. Question 2. First का ही second part है ये. Second question. That is point P minus 5, 7 and point Q minus 1, 3. Okay, these are the 2 points for which we have to find the distance between them. ठीक है, P और Q के बीच में का distance कैसे find करेंगे? Same formula. The distance will be equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, substitute the values. This will be equal to square root of x2 minus 1 को भी ले सकता हूँ, minus 5 को भी ले सकता हूँ. Anything is correct, but make sure you use the correct pairs. minus 1 अगर मैं x2 लूंगा तो minus 1, ये वाला minus. Make sure you use the correct sign. x1 is also minus 5. So this minus 5 will once again come inside a bracket. There will be 2 minus signs. ये formula का minus sign और ये value का minus sign. Okay? और इसका whole square plus y2 minus y1, that is 3 minus 7 the whole square. So this will be equal to square root of, now minus 1, these two minus sign, when they get multiplied it becomes positive. So here it is minus 1 plus 5. Minus 1 plus 5, we know it is 4. So 4 square plus 3 minus 7 भी minus 4 आएगा. So minus 4 square we'll get here. Once again, this is 16 plus minus 4 का square भी same होगा, plus 16. Okay, 16. So we are getting square root of 32 this time. What is 32? We know 32 is nothing but 16 multiplied by 2. Correct? 16 का square root हम लोगों को already पता है. What is square root of 16? It is 4. So 4 बाहर आ जाएगा. पीछे क्या बचेगा? Only 1, 2 will be left under root. So 4 root 2 units is the distance between P and Q. Okay. So same formula we use for this also. P is given minus 5, 7. Q is given minus 1, 3. Okay. You are supposed to make a note of this while I speak. So distance between PQ will solve using the same formula, that is square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Substitute the values. Minus 1 minus minus will become plus here. So minus 1 plus 5 the whole square, that is 4 square, plus 3 minus 7 the whole square, that is minus 4 square. Okay, so you are getting square root of 16 plus 16, that is square root of 32, which is nothing but 16 multiplied by 2. The square root of 16 is already known to us, that is 4, and root 2 will be left behind. So 4 root 2 units is the distance between the 2 points. Okay. Similarly, we can solve the third one. So third one solve करते हैं अभी. Next page पे let us go to the next page. Question number 1 का ही third one हम लोग solve कर रहे हैं. So third one is R 0, 3 minus 3 and second point is S 0, 5 by 2.
So same formula use कर रहे हैं. The only difference is this time there is a fraction, nothing else. So distance between RS, once again same formula, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, so square root of, if you see here x दोनों जगह पे 0 है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 0 minus 0 whole square ही है, nothing changes there. सेकेंड ब्रैकेट में 5 by 2 minus minus 3, or you can take minus 3 minus 5 by 2. Okay, 5 by 2 minus, one more minus is there, so minus 3. We'll take square bracket here, so square bracket में 5 by 2 minus minus 3 the whole square. Okay, this is the answer for this. Now 0 minus 0, anyways it is 0. ये वाला पार्ट कुछ काम का नहीं है. What we have here is square root of 5 by 2 plus 3 the whole square. तो square root भी है और square भी है. What will be left behind? Only 5 by 2 plus 3. Let us see क्या आ रहा है यहाँ पे. See here 5 by 2 plus 3 हो जाएगा ये and whole square. So as I said, square root भी है और square भी है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 5 by 2 plus 3, बिकॉज स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. 5 by 2 plus 3, इसको सॉल्व करेंगे. सो 2 3s are 6, 5 plus 6 upon 2, that is 11 upon 2 units. Or if you want to write this in mixed fraction, you can write 5 1 by 2 units. Okay, this is the answer for third one. So R and S are the points given here. We did the same thing, use the formula, substitute the values, find out the answer. Okay, so I'll wait for 10 seconds for you to note this down, and then we'll go to the next question. Okay, so the next question is a similar question. Once again, 2 points are given, L and M, 5 comma minus 8 and minus 7 comma minus 3, which nothing different you have to do, solve in the similar manner, apply the formula. Okay, so fourth question, fifth question and the sixth question. These 3 questions I'll be giving to you as your homework today. Okay, use the same distance formula and solve them. We'll go directly to the next question, that is question number 2. So let's go to question 2. Determine whether the points are collinear. Collinear का meaning I hope you people know by now. Collinear का meaning होता है the points that lie on a same straight line. These 3 points are called collinear points. ठीक है, तो ये अगर तीनों same line पे है तो these are called collinear points. तो हम लोगों को using distance formula ये check करना है कि whether the given points are collinear or not. Okay, so let us check that. Now there is not just one way of finding out whether the points are collinear or not. There are multiple ways. One is using distance formula, one is using the slope formula, which we will study later. But for now, let's stick to distance formula. We'll use distance formula to find whether the points are collinear or not. Okay, if you like that method, later on you can go to that method, which is simpler, by the way. Personally, I would suggest that you use that method. But since we are studying distance formula, let us try using the distance formula. Okay, so question number 2 में there are 3 points given to us. First question में देखो, first question में the first point is A, 1 comma minus 3. Second point is B, 2 comma minus 5. Third point is C, minus 4 comma 7. Okay, these are the 3 points that are given to us, और ये check करना है कि whether they are collinear or not. Okay, let us first find out the distance between all the 3 points individually. जैसे कि A और B का पहले find out करेंगे, फिर B और C का पहले करेंगे. Okay, then A और C का भी find out करेंगे. Why we are doing that? See, the logic is simple. If the 3 points are collinear, suppose A, B और C collinear points हैं,
Okay, so distance between A and B plus distance between B and C should be equal to the distance between A and C. हम लोग ये तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं सेपरेटली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. पहले AB, फिर BC, फिर A और C. ओके, नाउ इट माइट हैपन कि पोजीशन चेंज हो सकता है थोड़ा. C यहाँ पे भी हो सकता है सेंटर में, एंड B यहाँ पे भी हो सकता है. ओके, दिस माइट हैपन, बट वील ओनली नो दैट बाय चेकिंग. ठीक है, लॉजिक आई होप क्लियर है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ऐड होके अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, देन वी कैन से द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दे आर नॉट कोलिनियर. उसका मीनिंग क्या हुआ? ए बी सी कोलिनियर है ही नहीं, अलग अलग जगह पे सब. ठीक है, सो लेट अस सी वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट. फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए बी. Okay, now we are not going to write the formula each and every time. You are supposed to remember the formula. Okay, distance formula, I hope this is clear by now. मैं यहाँ पे कोने में लिख के रखता हूँ. Distance formula, distance between any two points is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, this is the distance formula. We are going to use that formula again and again. I am not going to write this formula again and again. You have to understand that we have used it. So distance between A and B will be equal to square root of x2 minus x1 मतलब 2 minus 1 the whole square plus y2 minus y1 मतलब minus 5, okay, minus 5 minus minus 3 the whole square. Okay, ये पहला डिस्टेंस हो गया. This will be equal to square root of 2 minus 1 is 1, so 1 square plus minus 5 minus minus will become plus, minus 5 plus 3 will be minus 2 the whole square. Okay, so this will be equal to square root 1 plus 2 square is 4. You are getting root of 5 here. The first distance that we got is square root of 5 units. Okay, that is distance between A and B. Now let us find out distance between B and C. Distance between B and C using the same formula will be minus 4 minus 2 x2 minus x1. ठीक है, इसका x coordinate और इसका x coordinate. Minus 4 minus 2 the whole square plus y2 minus y1. So 7 minus minus 5. Once again minus sign will be repeated twice. So 7 minus minus 5 the whole square. Okay, so let us find this. This will be equal to square root of, now minus 4 minus 2 will be minus 6 and minus 6 ka square will be positive 36. Okay, positive 36 plus 7 minus minus 5, of course it will become positive. So 7 plus 5, it is 12 square, that is square root of 36 plus 144. Okay, so you are basically getting square root of, what is 144 plus 36, it is 180. Okay, 144 plus 36 is 180. Root 180 के लिए जो 180 है उसको हम लोग factorize कर सकते हैं. Let us factorize 180. So this will be square root of 180 if you see the factors. Okay, 2 into 90, then once again 2 into 45, okay, then 5 into 9, 3 into 3, 3 into 1. Basically we can say that we can take some terms outside of the square root. ठीक है, इसके factors क्या क्या है? 2 into 2 into 5 into 3 into 3. Okay, here you can see there are two pairs which we can take outside. We have learned how to find out square root, so let us take them outside. ये मैं erase कर देता हूँ. This will be equal to 1 2 is coming outside, 1 3 is coming outside, and root 5 is left behind. So here we are getting 6 root 5 units as the distance between B and C. Okay, the distance between B and C is 6 root 5 units. अभी सिर्फ एक चीज बचा है यहाँ पे, to find the distance between A and C. Let us do that. Distance between A and C will be equal to square root of x2 minus x1. Now we are talking about A and C. So C is minus 4 comma 7, A is 1 comma minus 3. x2 अगर मैं इसको लेता हूं तो minus 4
minus 1 will be x2 minus x1 plus y2 minus y1 क्या होगा 7 minus minus 3. Okay, so once again there are two minus signs, 7 minus minus 3 the whole square. If we solve this, you will get square root of minus 4 minus 1 is minus 5. Minus 5 का square will be positive 25 plus 7 minus minus will become positive. So 7 plus 3 it is 10. 10 का square हो गया 100. So you are getting square root of 125. Now we all know 125 is nothing but 5 cube. So this will be equal to square root of 5 into 5 into 5. Okay, one pair of 5s we can take outside. The distance that we are getting is 5 root 5 units. Now we have got all three values. If you observe clearly, we have 1 root 5, we have 1 5 root 5, and when I add these two, you will get the third value, that is 6 root 5. Correct? That means the distance between AB and the distance between AC, when we add, we are getting the distance between BC. So point A lies in between B and C basically. Okay, so here we can observe, therefore here distance BC equal to distance AB plus distance AC. Okay, you can clearly see 6 root 5, okay, that is 6 root 5 equal to 5 root 5 plus root 5. Correct? So that means points A, B and C are collinear, but point A is lying in between them. Okay, the distance here is, therefore B, A, C are collinear points. Okay, ये exactly कैसे पता चला कि A बीच में है? We can say here distance between AB is root 5. Okay, distance between B and A is root 5 and distance between A and C is 5 root 5 and distance between BC is 6 root 5. That's why we have said that A lies in between. तो जब हम लोग collinearity लिखेंगे last में, we'll write it like this: B, A, C are collinear points. They lie in the same straight line because the distance between BA and the distance between AC, when we add them, we get the distance between BC. Okay, so this is the first question we have solved. How to find out whether the given points are collinear or not. Okay, remaining questions we have to solve in a similar manner, but before that I'll give you some time to write this down. So please make sure you finish writing this. So let us go to the next question. Second question here is L, M and N, 3 points once again. L is minus 2 comma 3, M is 1 comma minus 3 and N is 5 comma 4. So same thing, we have to check whether these points are collinear or not. Let's do that. First we'll find out the distance between L and M. Same formula, okay, x2 minus x1, that means 1 minus minus 2.
So 1 minus minus 2 the whole square. L minus m, we are finding out the distance between L and m. So x2 minus x1 is 1 minus minus 2 plus y2 minus y1. So minus 3 the whole square. Okay. This will be equal to square root of, once again two negatives will become positive. 1 plus 2 is 3 square plus minus 3 is minus 6. We add and give negative sign, so square. The distance will be 9 plus minus 6 square is 36. So square root of 45 is what we are getting here. Now 45, once you factorize 45, 9 5 is 45 होता है, ठीक है. तो 9 का स्क्वायर रूट हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे बाहर ले सकते हैं. 9 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 3 और पीछे क्या बचेगा 5. ओके, 9 5 is 45 होता है. 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 3, 5 पीछे बच गया यहाँ पे. सो 3√5 यूनिट्स is the distance between L and M. Let us find out the distance between M and N. Okay, distance between M and N will be equal to square root of, once again same formula, 5 minus 1, x2 minus x1, 5 minus 1 the whole square plus 4 minus minus 3. So 4 minus minus 3 the whole square. Okay. So let us find out square root of, this will be 4 square plus, this will be 4 plus 3, two negatives positive हो जाएंगे, 4 plus 3 is 7, so 7 square. So what you are getting here is square root of 16 plus 49. Okay, that means, so 16 plus 49 will become square root of 65. Now 65 we cannot factorize 65 because both are prime numbers. 13 5 is 65 होता है और उसमें से किसी का भी हम लोग स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते. So we'll leave it like this only. Okay. Then finally one more distance is left to find out, that is L and N. Okay, distance L and N. This will be equal to square root of x2 minus x1, 5 minus minus 2. So 5 minus minus 2 the whole square plus 4 minus 3. Okay, once you find out, you will get 5 plus 2, 7 square plus 4 minus 3 is 1. So 1 square. You are getting square root of 8. That is, once you factorize 8, it is 2 into 2 into 2. So one pair of 2's will come outside. You will get 2 square root में एक 2 पीछे बचेगा. This is the distance between L and N. Okay. Now in these 3 points, one distance we are getting is 3√5. One distance we are getting is square root of 65, and the final distance is 2√2. Here nothing is adding up to be the third distance. See, अगर हम लोग उसको same terms में लेते हैं, this is √45, correct? √45, this is √8, and if we add them, we are not getting √65. That's why these 3 points are not collinear. What is 3√5? If you try to approximate the value, see, √45 मतलब it will be 6 point something. Okay, 6 और 7 के बीच में आएगा. So this will be 6 point something. √65. Once again, √65 कौन से दो squares के बीच में आएगा? It is 7 and 8. I mean 8 and 9. It is 8 point something. Correct? This is √8. That is 2 point something. So the highest distance that we are getting here is 8 point something. Okay. Other distance that we have here is 6 point something. And one more distance that we have here is 2 point something. So clearly, ये दो distance भी अगर मैंने add किया तो it will go beyond 8, a lot more beyond 8. ठीक है? Nothing is adding up to be the third distance. That's why we can say clearly that these 3 points, they cannot be collinear. So how do we write this down? Since distance, what are the two smaller distances here? First, let us consider that it is √45 and √8. तो दोनों smaller distance add होके सबसे बड़ा distance जो है वो नहीं आ रहा है.
That's why these points are not collinear. So first we'll write down the two smaller distances. Distance LM plus distance LN is not equal to the third distance, that is distance MN. Okay, points L, M and N are non-collinear. ओके तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, अगर दो डिस्टेंस ऐड होके थर्ड डिस्टेंस आ रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर. इफ दैट इज नॉट द केस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. तो सेकंड क्वेश्चन में द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ओके सो we'll go to the next question in the next session. Till that time I hope you finish today's homework. That is question number 1 में से मैंने दिया है कुछ homework and some more homework will be attached with the lecture after you finish it. So please finish that homework and keep revising what we do in each session. Thank you everyone. We'll stop here.